Hello everyone. Now we will look for curl of a vector field. So हमने जब डाइवर्जेंस देखा था तब हम यही देख रहे थे कि मतलब वेक्टर फील्ड whether it is dispersing or it is getting collected at any given point. ये दोनों चीज़ें हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब हम कर्ल की बात करते हैं तो then curl is like to see whether the fluid, basically it measures the tendency of a fluid, whether it is swirl, means whether it is spinning or rotating about axis. That tendency of fluid it get measured by curl. So curl, if you clearly understand, it is the vector quantity, it has its direction, matlab it's swirling around axis, so that tells the डायरेक्शन ऑफ मतलब वो जो भी फ्लूइड है, वेक्टर फील्ड है, किस डायरेक्शन में इट्स अ टेंडेंसी टू स्वर्ल, दैट इज गेटिंग कैप्चर्ड बाय कर्ल. सो दैट इज़ नथिंग बट द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड. मतलब वेक्टर फील्ड अगर स्पिन हो रहा है, रोटेट होना मीन्स इट्स अ टेंडेंसी ऑफ वेक्टर फील्ड टू रोटेट और स्पिन एट गिवन पॉइंट, that will get captured by the curl. So now how we find the curl is while representing we use it curl of vector field f or curl मतलब del and उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे हम given vector field के साथ, and then we will be trying to find the value of the curl. So यहाँ पे अब अगर आपको याद होता divergence, while taking divergence we took the डॉट प्रोडक्ट. यहाँ पे जब हम कर्ल निकालते हैं किसी भी गिवन वेक्टर फंक्शन का, तब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. दिस इज अगेन द डेल वैल्यू आई हैव पुट इट, एंड दिस इज द एफ वेक्टर. आई पुट इट इन द टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप. नाउ वाइल टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट हम क्या सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट बना लेंगे. पहली रो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगी आई कैप, जे कैप, के कैप की. नाउ second row, in the second row what we will be writing, here we will be writing the first vector जो भी del के साथ I cap, J cap, K caps के साथ आ रहा है, that we will be writing. And in the second row what we will be writing the vector मतलब जिसका हमें that is given function, vector function, उसका हमें I cap, J cap और K cap के साथ जो भी values आ रही है that we will be writing. So basically we will be forming the determinant and then we will be solving that determinant, and that will give us the curl of given vector. So here curl of any vector field, it's a vector quantity. After simplifying whatever we will be getting, that answer will be in the form of I cap, J cap and K cap. मतलब वो वैल्यू वेक्टर वैल्यू आ जाएगी. वेक्टर फंक्शन हमें वो रिटर्न करेगा जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ऑफ गिवन फंक्शन विथ डेल ऑपरेटर. सो रिमेंबर दैट व्हेनेवर वी वेयर हमने जब भी डाइवर्जेंस निकाला था गिवन फील्ड का, वेक्टर फील्ड का, तब हमें मिला था स्केलर क्वांटिटी मिली थी. यहाँ पे जब हम कर्ल निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं डेल ऑपरेटर के साथ गिवन वेक्टर फील्ड के साथ, सो दैन दैट टाइम वी गेटिंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन और वेक्टर फंक्शन. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. सो बिफोर वी गोइंग टू द क्वेश्चन, हाउ वी रिप्रेजेंट इट, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कर्ल ऑफ ए वेक्टर. नाउ वन थिंग इज हियर, व्हाट इज ir-rotational field, ir-rotation वेक्टर फील्ड. ir-rotation मतलब मीनिंग ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है. ir-rotation means doesn't rotate. That vector field doesn't have that tendency of swirl around at any given point in the vector field. मतलब वो स्पिन नहीं हो रहा है, रोटेटर नहीं होता है. सो इट्स ir-rotational. सो मतलब कर्ल जब भी हम लिखेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, बिकॉज इट डजेंट हैव टेंडेंसी, दैट वेक्टर फील्ड डजेंट हैव टेंडेंसी टू रोटेट और स्पिन. सो कर्ल उसका ऐसा जो भी फंक्शन वेक्टर फील्ड रहेगा, जो भी ऐसा फंक्शन होगा, उसका कर्ल अब जब भी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आने वाली है. सो दिस इज़ व्हाट ir-rotation vector field means, and we are saying that angular velocity is zero. Angular velocity is nothing but the same thing like how it's spinning around the rate of change basically at particular point in the of vector field. So that's basically it will be 0
that's why it is curl is returning 0. So whenever it comes 0, curl of any vector field is 0, then it's an irrotational vector field. Now next thing is we will be looking for the question how to find divergence and curl. So यहाँ पे मैंने question लिया है find the divergence and curl of f vector. This is given here 3x square I plus 5x square y xy square j plus xyz square k at point 1 2 3. So सबसे पहले तो हम डाइवर्जेंस निकालेंगे, उसके बाद हम कर्ल निकालेंगे. डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे वो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे डेल ऑपरेटर के साथ गिवन फंक्शन f के साथ. सो नाउ दिस इज द गिवन f फंक्शन वेक्टर फंक्शन जैसे क्वेश्चन में दिया है एज इट इज़ आई हैव रिटर्न इट. नाउ वी विल टेक अ डॉट प्रोडक्ट विथ डेल ऑपरेटर. डेल ऑपरेटर यहाँ पे मैंने जैसे हमने उसको फिजिकली हाउ वी रिप्रेजेंट इट सेम वे वी डिड इट. एफ जो भी गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में एज इट इज़ आई हैव रिटर्न इट. नाउ वी विल स्टार्ट टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, मतलब हम जो आई की क्वांटिटीज़ हैं उनको हम वी विल पुट इट टुगेदर. सो डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3x स्क्वायर. नाउ द जे द क्वांटिटीज़ विथ जे उनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉट मल्टीप्लाई, वी विल बी डिफ्रेंशिएटिंग बेसिकली पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई. नाउ k along with k cap along with k whatever we are getting that we will be taking over here del by del z of xyz square. Now differentiate here the first term we are differentiating with respect to x, so we got it 6x. Now here second term we are differentiating with respect to y, so 10xy. Then this is with respect to z, so 3xyz square. So this is what I have got it by finding the divergence of given vector f. But लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है at point 1 2 3, मतलब x y z की वैल्यू हमें 1 2 and 3 we have to substitute in the given whatever value we got it. तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है 1 रख दिया, y की जगह 2 and z की जगह 3. So this is what I got it and I have found the divergence of given vector function. So this is nothing but the value, it's 80. As you see that there is no direction as it coming, so it's a scalar function. Only magnitude है हमें मिल चुकी है, तो वो scalar function है after finding the divergence of any vector function. Now let's start looking at the curl of given vector. कर्ल कैसे निकालेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा. क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, बाय राइटिंग द डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप होना होगा. देन द फर्स्ट रो विल बी विथ डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, जो कि डेल के इसका डेल ऑपरेटर के साथ आते हैं. नाउ दिस थर्ड वो रो विल बी द फंक्शन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. उसका जो वैल्यू आई कैप जे कैप और के कैप के साथ आएगी वो वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने रख दिए. नाउ द सिंपल हाउ वी सॉल्व द डिटर्मिनेंट, सेम वही रूल के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट रूल अप्लाई करके. तो आई वैल्यू आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वैल्यू वी विल टेक इट एंड वी विल बी डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस वन. सो डेल बाय डेल वाई इंटू एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस ये वाली जो डेल बाय डेल जेड ऑफ 5xy स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस. नाउ इसको एक बार ले लेंगे विथ माइनस, सो माइनस जे. नाउ दिस रो वी विल बी दिस कॉलम वी विल एलिमिनेट एंड डेल बाय डेल एक्स ऑफ इसके साथ xyz क्यूब माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ 3x स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिया. नाउ अगेन प्लस साइन वी विल बी टेकिंग विथ के कैप, जो कि यहाँ पे लिया हुआ है. And then we will be taking del by del x of 5x square minus this one. It's the same way like how we normally solve the determinant, same way we will be doing, no difference at all. Here start differentiate with y with respect to y. तो यहाँ पे आ जाएगा x z cube. Since we are here del by del z के साथ with respect to z we are partially differentiating. तो यहाँ पे there is no z term, so x y will be considered a constant, 0 आ जाएगा उसका. Now with respect to x it will be yz cube, and with respect to z there is x only term, so which will be considered as 0.
नाउ हियर x के साथ डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 5y² और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, y है वहाँ पे नहीं है तो वो x टर्म 0 हो जाएगी. So this is how simple partial differentiation we have done it. So we will get some quantity in terms of x, y, z. So if you see it here, xz cube I minus yz cube j plus 5y² k. So in terms of I cap, j cap and k cap, I have received these values. So if you see here, this is the vector quantity which I have received. Now at point 1, 2, 3 I have to find. So simply I will put the values x की जगह 1, y की जगह 2 और 3 के z की जगह 3 हम रख देंगे. And after doing the calculation, I will receive the value curl of given function f at point 1, 2, 3. This is what I have received it. And वही मुझे question में पूछा जा चुका है, find the divergence and curl. So simply we have done to find the divergence, we have taken the dot product of given function with del operator, and to find the curl of the vector we have taken the cross product of given function with the del operator. And so calculation is quite important, simply that you have to pay attention. Other than that, it's a simple. Only thing is, remember the concept of divergence, like why we do it, curl, what is the difference between divergence and curl. Curl जैसे मैंने बोला था कि that measures the tendency of vector field to rotate or the spin or swirl, we say that, around any point or at any point. So it does have direction, it's a vector quantity. And when we say about divergence, it captures the tendency of fluid to diverge or disperse or collect at any point. So that is a scalar quantity. दोनों में जो difference है वो आपको याद होना चाहिए. और मतलब divergence free मतलब जैसे term से ही पता चलता है कि जिसको divergence नहीं है, मतलब क्या है, divergence 0 है. So that means it's not a changing basically. So वहाँ पे आपको divergence of that vector field you will get it 0. एंड जब आप कर्ल का किसी वेक्टर फंक्शन का आप निकालते हो तो अगर वो 0 आता है तो वो इर-रोटेशनल वेक्टर फील्ड होता है, मतलब दैट इज़ नॉट swirling basically. It's not a spinning, vector field is not spinning at any point. So ir-rotational मतलब angular velocity उसकी 0 है. So its terms should be clear, दोनों terms आपको clear होने चाहिए. और if the term is clear, you will understand what is the difference between two. Or then this concept of ir-rotational vector field, that will also be clear, and it will be much easy to solve the question also if you understand the concept. And I hope it is clear to you. Thank you.